अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसाराना और आपको लाहौर रेटेट में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत है जिनका बराह रास्त लाहौर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस वक्त उनका लाहौर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ और मुझे इंग्लिश में सवाल पूछने पड़ेंगे। इसमें एक बड़ी दिलचस्प सी कल से मैं कैफियत का शिकार हूँ और वही कैफियत ये है कि मुझे पहले ज़िंदगी का इंग्लिश में इंटरव्यू करना है। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी ज़बान रखने के बावजूद गूंगे हैं, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी ज़बान के ऊपर फ़ख्र नहीं कर सकते, उसे बोलते हुए थोड़ा सा शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। हमने क्राइटेरिया ये बना लिया कि जो हमें इंग्लिश बोल सकता है वही ज़हीन है या वही बहुत आला तालीम याफ्ता है, जबकि पाकिस्तान का जो फोक विज़डम है जो पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया, बाबा बुल्ले शाह के कलाम को शेक्सपियर और वुड्सवर्थ से अगर उसका मुआजना किया जाए तो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा डेप्थ है उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गिरफ़्तार हैं उन लोगों के हाथों में जिनके हाथों में हमारी तकदीरें हैं और जो इंग्लिश में तकदीरें लिखते हैं। लेकिन हमारे पास जो आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। लाहौर के विज़िट पे आए हुए हैं मिस्टर पीटर, सीईओ हैं कल्चरल इन्फ्यूजन के ऑस्ट्रेलिया से, और हमारे दूसरे मेहमान हैं उमर इरफान साहब। उमर इरफान साहब YRC के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हैं, और पीटर साहब जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर को देख रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे, गेस्ट इन टाउन हमारे पास हैं तो उनसे पूछेंगे उन्होंने लाहौर को किस तरह देखा। हम तो लाहौर को देखते ही हैं, लेकिन वो किस नज़र से लाहौर को देख रहे हैं। मिस्टर पीटर, वेलकम टू द शो। उमर इरफान साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। Welcome. पीटर साहब, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन इन पाकिस्तान? How many times have I been to Pakistan? Yes. This is my first, and I believe it's going to be my first of many times. Really, you think what was your perception before coming to Pakistan about Lahore and especially Pakistan? Well, it's very interesting. I didn't have any expectations. And one of the reasons why I didn't have any expectations was because I already knew a lot about this country. I knew a lot about this country from thousands of years ago. I knew of Harappa, the ancient Indus Valley civilization. I knew of the 27 Greek kings, Buddhist kings that administered this area of Gandhara many, many years ago. So I already had an affinity with the place. But back in Australia, the perception of this place is quite different. The morning before I left, I went to the bakery to buy some bread. And the two ladies that run the bakery there said, "Where's your next trip?" And I said, "Well, my next trip is actually going to happen tomorrow, and I'm going to Pakistan." And as soon as I said that, they went, "Why are you going to Pakistan for? It's a desert. There's nothing there in Pakistan." So there is already a perception out there, outside Pakistan, that is very different to the experience that I've had. The luscious green city that Pakistan is, the welcoming city that Pakistan is, and of course all the museums and the delicious food. You enjoy Lahori food? I love Lahori food. One night we went out with the Youth Revolution Clan, and they took me to 18 chapatis. Yeah. We went out and we had araf chicken and 18 chapatis. There was 5 of us, and I think we had 11 chickens and 18 chapatis. It was delicious. Of course, it kept me awake for most of the night, but it was well worth it. Have you visited Alam and food city of Lahore? And Yeah, yesterday we were at Village Restaurant and he appreciated a lot the ambience of Village Restaurant and he loved the food, the way. What you like most in Pakistani food? Well, I like the diversity in the food. The Pakistani food is so diverse. It's so rich. The spices, the colours, the smells, just the aromas. When you eat the food, it is a new experience that you have almost every single bite. Right. Did you find any difference between Pakistan and Australian food, especially as per spices are concerned? Well, if I want to find Pakistani food in Australia, I have to look for it. But I'm not going to experience the richness, the diversity, the different types of Pakistani food that I've experienced in the last few days here. उमर इरफान यार, मैं तो जब ये बातें सुन रहा हूँ तो मेरे अंदर एक मेरे खून में ना एक हिद्दत में महसूस कर रहा हूँ।
हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि हम कुफरान नेमत की हद तक चले जाते हैं। मिस्टर पीटर जो कुछ बता रहे हैं, जिस तरह हमारे खाने के मुतालिक है और हमारे लाहौर के मुतालिक, अभी तो इब्तिदाई बात शुरू हुई है, जो कह रहे हैं, मेरे लिए तो ये बड़ी एक पॉजिटिव और बड़ी ताकत पहुंचाने वाली बात है। और इसका क्रेडिट जाता है आप लोगों को, जिन्होंने इन लोगों को बुलाना शुरू किया और यहाँ बुला के उन्हें बता रहे हैं कि हम सहरा में नहीं रहते, हम लाहौर या पाकिस्तान या कराची या इस्लामाबाद या पेशावर या कोयटा, इन जीते रहे मेरे तमाम शहरी। अल्लाह इनको इसी तरह ज़िंदगी दे, इनको आबाद रखे। ये लोग देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हाउ यू फाइंड लाहौरीज पीपल, especially when you meet and when you go in the streets and met people here in Lahore? That's a very good question, because what makes cities is citizens. The people make the cities. And the experience I've had here is a warm experience. People have received me with open arms. And I think the values of Eddie, the great humanitarian who was described in the Huffington Post as the greatest living humanitarian in 2012. For Eddie to have achieved what he achieved, he needed a nation of people to support him. Exactly. He needed a nation of people. It was not possible without a nation. Yes. To donate him as much as they can. Of course, and he needed a nation of people that had the same values, the values of inclusiveness, caring and hospitality, the best hospitality I've experienced here. Why West always give very importance to Mother Teresa? We respect her a lot from bottom of our heart, but why they didn't give the place which Eddie deserves? Well, it's interesting because I never heard of Eddie until Facebook recently, and I noticed him coming up in the news feeds. But I didn't realise that he would be all over the city here as well. I think what Pakistan needs to do is now begin to communicate. It's not a positive image of Pakistan. You need to communicate the true story about Pakistan, because it's always been there. What should Pakistani media do for communicate the positive aspects of Pakistan? It needs to focus on people like Eddie. It needs to start to focus on the culture of Pakistan, the culture of Lahore. And I said on my 7th night, that night that I had the araf chicken. राणा साहब, आप पहले कह रहे थे कि हमें अपनी ज़ुबान बोलने पे, अपने बहैसियत कौम, हम इस चीज़ को मतलब हमें वैसे प्राइड नहीं फील करते जैसे हमें फील करना चाहिए। इट इज़ टाइम कि अब हम अपने कल्चर को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, इसको समझें और उस पर प्राइड फील करें। और जब तक पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हम मिल के एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को नहीं दिखाएंगे, जैसे अभी ये बता रहे हैं, पिट साहब बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं है, ये ओवरऑल सोसाइटी पे है। अभी कुछ देर पहले पिट साहब कह रहे थे कि वी एट यूथ रेवोल्यूशन क्लैन वी पोर्ट्रे आ true image of Lahore rather than a positive image of Lahore, and the true image of Lahore is far better than a positive image of Lahore, जिसमें हम लोगों ने हकीकत में बताया, जिसमें हमने बताया कि आखिर लाहौरीज हैं क्या। जब ये वहाँ से यहाँ आ रहे थे, लोग इनको डरा रहे थे, आप सहरा में जा रहे हैं, आप यू आर गोइंग टू बी मीट विद टेररिस्ट एंड आई डोंट नो कैसे इनको कैसे कैसे ख़तरात का सामना है, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन जब ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने यहाँ हमारा लिविंग स्टाइल देखा है, हमारे यहाँ पे फूड्स देखे हैं, यहाँ पे हमारे रहन सहन देखा है, तो मुझे ये भी गाड़ी में कह रहे थे कि Peter sir, what do you think how much reach our Lahore culture? The Lahore culture is probably the richest in the world. On my 7th night here, I put a Facebook post up and I said, I've been here for 7 nights and tonight I was born, because the experience that I've had here in those 7 nights, all those different experiences, I've never had anywhere else beforehand. We shared the quote, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमे नहीं। तो he said कि मैं 7वीं रात को मैंने फेसबुक पोस्ट किया कि आज मैं पैदा हो गया। What's interesting is a lot of people responded and they said, "Oh, congratulations for your rebirth." And I responded and I said, "It wasn't a rebirth. I hadn't been born yet."
नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. आज तो पीटर साहब ने भी ये बात मान ली कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. पीटर साहब से बहुत सारी बातें करनी है.